Assalamu alaikum students. We are again here to discuss our lecture for economy today. Lastly, we had told you that we will be completing our digital payment systems, and we had almost it's a lesson or two. It's a lecture or two that are required in this sector, and finally we shall complete our module. And today we will have an important discussion about fintechs and how do they operate, how do they work, what is their importance in India, how they have improved the financial inclusion and financial autonomy, independence, and financial stability in India. This is very important for us to understand because, lastly, we also said we also also saw a budget. What did budget 2022-2023 reflect? The fintechs have a major role to play in digital payment ecosystem to let India to achieve the path of Amrit Kal, which is very important. And this Amrit Kal had been well defined in the speech of Prime Minister Modi in his independence speech. ठीक? And now, since fintechs have been making there are almost today, if we see in India, there are about 70, more than 17 fintechs that have achieved a unicorn status. वो means और हर किसी न्यूज़पेपर चाहे ऑफ इंडियन एक्सप्रेस चाहे हिंदू चाहे इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस लाइन या बिजनेस स्टैंडर्ड सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स इन फिनटेक्स की एग्जाम्पल्स और इनकी वर्किंग और बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हाट एक्चुअली आर दीज फिनटेक्स। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी और वहाँ से ही हमारी बेस बन जाएगी, हाउ डू दे ऑपरेट एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। आमतौर पर क्या किया जाता है इस टॉपिक में? वी स्टार्ट फ्रॉम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट that is that's a forward linkage topic, but we'll have to approach our approach should be to connect to come to that topic rather studying to that topic directly. No, we should be able to develop a backward linkage, ठीक। and वहाँ से जाके हम देखो हम तो हब को पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम स्पोक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले हब को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, फिर स्पोक हमें खुद समझ आएगी कि कौन सी स्पोक की क्या इम्पोर्टेंस, ठीक है। नाउ फिनटेक, इस पे आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर जाके हम उसी हिसाब से अपने लेक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए आप क्वेश्चन फिनटेक के बारे में। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट फिनटेक मार्केट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग fintech markets in the world. देखिए, यूपीएससी में डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मगर जो मैं यहाँ क्वेश्चन आपको फ्रेम कर रहा हूँ, मैं उसी क्वेश्चन में इसके सारे एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो ठीक है। enumerate its use, ठीक। enlist various initiatives
taken by government. Slash RBI. ठीक, to promote same, huh? To promote it. फिर highlight the challenges faced. Highlight the challenges that needs to be addressed. देखिए, जब हमने इस क्वेश्चन समझ आया आपको, लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, या तो टॉप डाउन अप्रोच करके हम फिर ऊपर से आए फिर चीज़ों को फ्रैगमेंट करना स्टार्ट करें, या बॉटम अप अप्रोच से। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बॉटम, व्हाट डू आई मीन बाय बॉटम अप अप्रोच? हम देखेंगे एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटर, what challenges a common man or a financial service provider or any beneficiary or any benefactor is having. हाँ, वो पहले हमने जब भी हमने ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम में हमने देखा कि इंडियन मार्केट में ऐसी कौन सी चैलेंजेस थी जिसकी वजह से हमें डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पे आना पड़ा। ठीक, हाँ, वो देखा ना हमने। Then we came to know about how does the digital payment system operate. हाँ, वो भी हमने what challenges it address, हाँ, what significance it carries, what advantages it has, ये देखा हमने कि नहीं देखा? ठीक, sorry, excuse me, shall I take over? ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। तो जो चैलेंजेस हमने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में देखी, वो चैलेंजेस यहाँ पे भी है। ठीक, अभी भी वो चैलेंजेस है, वो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? या तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से, या पॉलिसीज से, या रेगुलेटरी मैकेनिज्म से, या सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करके। मीन्स फिर जब चैलेंजेस आएंगी तो हमारे पास गवर्नमेंट और आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए होंगे। जा रहे हम नीचे से, ठीक, और उसकी वजह से जब वो चैलेंजेस एड्रेस हुई होगी, when those challenges would be addressed, तो naturally and the natural corollary of all that is that India is destined to become a fastest growing fintech market. Did we do the same? We addressed what we tried to analyze. What were the challenges in simple financial ecosystem? Then we tried to move towards a digital payment ecosystem, and we tried to we tried to find out those challenges as well. ठीक? And one of the biggest challenges what we saw was interoperability, and other accessibility, third affordability, and fourth accessibility. Isn't it? We try to focus on these four parameters. We try to focus on these four parameters and try to develop an ecosystem which shall help us to plug these loopholes. Isn't it? It's important that ease of transaction is very important for a common man. जितनी ट्रांजैक्शन आसान होगी, जितनी एक फाइनेंशियल सर्विस आसान होगी, उसको उतना मजा आएगा एक फाइनेंशियल सर्विस में अपने आप को इंक्लूड कर। ठीक,
हाँ ठीक। अगर और चूंकि ये एट लास्ट इट्स अबाउट मॉडिफाइंग मोल्डिंग अ बिहेवियर, एक ह्यूमन बिहेवियर चेंज करना है, एक बिहेवियर पैटर्न चेंज करना है, ठीक। नाउ वी शैल कम टू नो, ये चीजें हमने पता है। अब हम थोड़ा फिनटेक्स के बारे में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। ये चले, ये समझ आया हमने कैसे पढ़ा है, और अब हमें अब इस क्वेश्चन को आंसर करने में आसानी होगी, ठीक। अगर हम फिनटेक की बात करें, दो वर्ड से बना है, फिन और टेक, मीन्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मीन्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। और सिंपल डेफिनेशन यही है, क्योंकि देखो अगर हम इसको सिंपल में बोलेंगे इट्स अ टेक्नोलॉजी, नो इट्स एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्यों? अभी ये सैचुरेट, ये फील्ड, ये मार्केट नहीं हुआ है। कल परसों आप गूगल पे देख रहे थे, फिर भारत पे, फिर फोन पे, हर किसी दिन एक नई एक फिनटेक, एक वैलेट आपको देखने को मिलता है, और एक नई सर्विस देखने को मिलती है। तो इट्स इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी for improving and automating financial services, Shabash, in terms of delivery and usage. ठीक है, सिंपल। नाउ सिंपल फैक्ट, आपको आसानी से पता है कि फिनटेक किस किस काम में आती है। तो अब हम कुछ एरियाज हाईलाइट करेंगे, कि इसकी इन्यूमरेट करेंगे रादर, क्योंकि उसकी यूजेस आपको ऑलरेडी पता है, ताकि आपके पास एग्जाम में वो 150 पॉइंट्स, 150 वर्ड्स का एक मटेरियल आपके सामने आ जाए। तो अब हम उनकी इन्यूमरेशन देखेंगे। ये आपने लिखा, हाँ समझ आया? सिंपल डेफिनेशन, बिकॉज वी आर टारगेटिंग इट मेंस वाइज। फिर उसी मेंस टॉपिक में हमें कुछ प्रिलिमिनरी के हेडिंग्स भी मिलेंगे, और उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक? समझ आया? Which sectors it addresses, means uses, huh? पर्सनल फाइनेंस है कि नहीं? खाता बुक, आपने खाता बुक का नाम सुना है? परसों ही एक दुकानदार मुझे वो खाता बुक दिखा रहा था और बोल रहा था, देखिए कि मेरा एक छोटी सी दुकान है, हाँ मेरी एक छोटी सी दुकान है, और उस छोटी सी दुकान में मेरा डेट ऑलमोस्ट 40,000 का है। मीन्स बाहर जो लोगों के पास मेरे पैसा पड़ा है, हाँ जो रिकवर नहीं हो पा रहा है, वो कितना है? 40। इससे पहले उसको क्या करना था? क्या वो मुझे एक सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन या से दिखा सकता था कुछ साल पहले? नहीं।
उसको मुझे लेजर दिखनी थी, फिर मुझे यहाँ से क्रेडिट और डेट की स्टेटमेंट देखनी थी, फिर देखना था ओवरऑल डेट या क्रेडिट कितना है। ठीक है, आज फिनटेक की वजह से मुझे सिंपल उसको एंट्री करनी पड़ती है, उसको एक सिंपल एंट्री करनी पड़ती है और वो खुद कैलकुलेट ऑटोमेट हो जाती है और उसको पता चलता है कि अभी चलो उसके पास मेरा कितना कर्जा है और टोटल कर्जा कितना है। हाँ, रियल यूपीएस एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट or JKPSC aspirant, rather a civil service aspirant, should think like a common man, should take real life examples from the market. Or after all, you have to address these challenges. After all, you have to address these challenges. You will have to find problems, you will have to acknowledge those problems, and you will have to try to reduce those problems. ठीक? Now, second, ये सिंपल पर्सनल फाइनेंस ऑनलाइन सर्विस मिलती है, अपने अकाउंट को वो मैनेज करता है, अपने डेट को वो मैनेज करता है। फिर दूसरी चीज, पेमेंट्स एंड बिलिंग। जब मुझे इस कोचिंग सेंटर के टीचर्स को पे करना पड़ता है, ठीक, मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं सिंपली अपने अकाउंट से ट्रांसफर करता हूं उनके अकाउंट में पैसे। ठीक, अगर यही चीज मुझे कुछ साल पहले करनी होती तो मुझे बैंक पे जाना था, फिर उनके अकाउंट में क्रेडिट करना था वो पैसा। ठीक, इट वुड हैव बीन वेरी hectic. In today's modern world, जहाँ टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा पेंडिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेक्टिक और इम्पेडिमेंट बन जाता है। ठीक, और साथ ही में क्या करता है, बिलिंग। अभी मुझे ख्याल आया था जब मैं चाबी इस कोचिंग सेंटर की ढूंढ रहा था कि मुझे इसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी है, तो अभी क्लास खत्म होने के बाद थ्रू वन क्लिक आई विल पे दिस बिल। ठीक, इंश्योरेंस, कितनी ही मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन ही आपको इंश्योरेंस, पॉलिसी बाजार, ऑनलाइन ही ये सारा कुछ हो रहा है, आपका डेटा मैनेज हो रहा है। हाँ, आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन, और आपको डील्स भी वैसे ही दी जा रही है। लुकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, कैपिटल मार्केट्स, कल ही मुझे वो स्टॉक का कोई बोल रहा था, क्या नाम है उसका, जहां ट्रेड्स की, हाँ, क्रेडअप, नो, उसका एप्लीकेशन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कैपिटल, वहाँ ट्रेडिंग होती है, ट्रेड बाजार। ठीक है, it's all happening through a simple application, huh? Demat. Yes. Then wealth management. What do you mean by wealth management? कि मुझे अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, अगर मेरा ये पैसा है मुझे किन किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अपने पास रहना चाहिए, कितना बाहर देना चाहिए। हाँ, isn't it that way? ऐसी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? करता है ना, मतलब यू कैन टेक एग्जांपल्स, मतलब बहुत सारे तो है ना, आपको वहाँ बोल रहे हैं ना कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। सपोज होते हैं ना कोई, ये मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रही है, तो आप ये तो सिंपल, आपको ज़्यादा यंग हो तो आपको ज़्यादा इन एप्स के साथ डीलिंग है। वेल्थ मैनेजमेंट, ये तो सिंपल, आप इस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो। यू डोंट हैव टू फाइंड ऐसे, आपको सिंपल कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप जो आपको बोलेगी कि इसमें आप आगे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये वो आपको ट्रेड्स, जैसे ना क्रिप्टो करेंसी के वक्त वो दिखाते थे कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी आगे राइज होगी, कौन सी
फॉल होगी। ठीक है, ऐसे ही वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें, हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट ऐप होगी, वो आपको वहाँ से आपको पता चलेगा मुझे कौन से पैसे कहाँ कितने पैसे किस में डालने हैं, कौन सा सेक्टर बूम में चला जाएगा, कौन सा डाउनफॉल में आ जाएगा। ठीक, मनी ट्रांसफर रेमिटेंसेस, अगर आप दूसरे मुल्क में हो, आप सिंपली इससे पहले क्या जाना पड़ता था, आप मुझे क्या है उसका नाम, पहले करना पड़ता था वो कन्वर्ट, फिर जाके फिर पैसे यहाँ भेजने थे थ्रू बैंक्स। आप सिंपल अगर ये जॉइंट कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, सिंपल वो वहां से रेमिटेंस मेरे घर के अकाउंट में भेज सकता है कि नहीं। These are areas जहां आपको फिनटेक्स का काफी रोल समझ आ रहा है, और साथ ही में मॉर्टगेज एंड रियल एस्टेट, ये सब कुछ अवेलेबल है। अब हम इस पे इंटरेस्ट, ये हमारी चूंकि हमारा पर्सनल फाइनेंस कम है, हम ज्यादातर इन दो एरियाज पे फोकस्ड है, क्योंकि हमें फिर सिर्फ ज्यादातर इन्हीं दो, हाँ, वरना देखो अभी इंश्योरेंस की तो बात ही नहीं है, कैपिटल मार्केट की तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमें इनकी एग्जांपल्स याद नहीं है, मगर जहां हमारी डीलिंग है उनकी एग्जांपल्स तो एटलीस्ट हमें पहले ही याद आए। ठीक है ना, मॉर्टगेज एंड रियल एस्टेट, लैंडिंग, कितनी सारी मोबाइल एप्स है, यही डिजिटल वॉलेट्स है जो आपको लैंड पैसा करते हैं, हाँ, विद दिस मच ऑफ इंटरेस्ट। और आरबीआई ने रिसेंटली सर्कुलर निकाला था कि दे वांटेड टू एंश्योर कि इसमें कोई फ्रॉड ना हो, तो उन्होंने बोला कि आप एक पॉजिटिव लिस्ट तैयार कीजिए कि वही, ताकि वही एप्स फिर काम करें, बाकी एप्स को वो बंद करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज नॉट a risk proof. Lot of fraudulent activities can take place. हाँ, रियल एस्टेट में कि कहाँ खरीद फरोख्त हो सके, आपको इन्वेस्ट तो नहीं करना, वही ना। लैंडिंग तो आपको पता ही है, पीयर टू पीयर लैंडिंग। हाँ, और क्या है, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, उसमें भी है, हाँ। और है रेगुलेशन टेक्नोलॉजी में, ऑडिटिंग रेगुलेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं रेगटेक, क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑडिटिंग, उन सर्विस में भी फिनटेक्स का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक, यहां तक कहीं कोई डाउट, सिंपल है यहां तक, ये इनका वाइड स्पेस है। पहले हमने रखा था, कोशिश की थी जब नई है, बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने, नाउ दे आर ऑलमोस्ट कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम डेटा से इसको कोलैबोरेट करें कि इंडिया में लगभग अभी 2100 फिनटेक्स प्रेजेंट है। कितने हैं? 2100। और 2020 में ये माना जाता था इनका जो मार्केट साइज है, मार्केट वैल्यू है, इट इज अबाउट 50 to 60 बिलियन USD। मगर by now it is being assumed that by 2025 this market value will go to 150 billion dollars. Very huge, huh? Very Also used in education. yes, education, language. Sorry. Yeah. Examples. Yes, these are the bottom. Obviously,
एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो अभी एडटेक कंपनीज है वो भी तो फाइनेंशियल सर्विस इसी से प्रोवाइड करते हैं ना। अगर हमें सपोज देखो यूपीआई फिनटेक का एक पार्ट है। जब हम उनको पेमेंट करते हैं तो हम वाया यूपीआई करते हैं या किसी और ऐप से करते हैं, तो वो भी तो फिनटेक का इकोसिस्टम का एक बड़ा पार्ट है। तो बहुत ऑलमोस्ट इज कवरिंग नाउ एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ, फ्रॉम टू टेल वी मे फाइंड इट्स यूज एवरीवेयर। ठीक हो गए 3 पार्ट हमारे क्वेश्चन के एड्रेस। एक हो गया इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस हमने पहले ही एड्रेस किया है, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल इंक्लूजन। हाँ, वो सारी चीजें हमने पता है कि वो क्योंकि चूंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी में जो भी चैलेंजेस है और फाइनेंशियल सर्विसेज में जो भी चैलेंज है, उन जो चैलेंजेस को हम ग्रुप करके इसकी चैलेंजेस हमने ऑलरेडी स्टडीड। नाउ वी डोंट वांट टू रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स। हम मल्टीप्लिसिटी नहीं चाहते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब हम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस, व्हाट इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू और आरबीआई ट्राइंग टू डू टू प्रमोट दिस सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां जाके आपको मजा आएगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अब खो जाओगे आप। ठीक है, मगर जब एक यूपीएससी के स्टैंडर्ड के तरीके से पढ़ेंगे, यूपीएससी की बोर्डरी को मद्देनजर रख के पढ़ेंगे, हाँ, उन कॉन्ट्योर्स को डिफाइन करके पढ़ेंगे, तो हमें एक लेंथी डाइवर्सिफाइड टॉपिक, एक स्कैटर टॉपिक हमें समेटना है यूपीएससी की आस्क के हिसाब से। ठीक, नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट कम आरबीआई इनिशिएटिव्स। ठीक है, और यहां पे आपको दोनों जगह, चाहे मेंस हो या प्रिलिमिनरी एग्जाम हो, दोनों जगह आपको टच किया जाता है। आपको आस्क दे ट्राई टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ first and foremost thing you will have to see is how will we fragment it. How will we fragment it? Now, first thing would be policy. Government क्या policy होगी, ठीक है, policy wise। हाँ, policy wise में आपको पता ही है कि the world's largest financial inclusion program, जन धन योजना, इस पॉलिसी के बारे में आपको पता ही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की पॉलिसी है। हाँ, वर्ल्ड इज लार्जेस्ट है, ऑलमोस्ट 435 मिलियन बैंक अकाउंट्स खोले गए और लोगों को एक फाइनेंशियल स्पेस में इंक्लूड किया गया। इज इट दैट? New. हाँ, This 435 is new bank account. yes, yes. That is, I am specific about this policy. ठीक है, हम स्पेसिफिक। जब मुझे जामिया मिले में ये इंटरव्यू, आपसे वो सवाल जो मुझे वहाँ इंटरव्यू पैनल में पूछा गया ना, वही सवाल मैं आपको पूछूंगा। नाउ लेट मी सी how well you can answer it. Though I had defined it, he tried to create a situation where I shall contradict myself. But I don't know what helped me along. I was very strict. I remained strict to my point. I did not even change a fragment of a sentence to contradict myself. He asked me, this Jan Dhan Yojana was a new Yojana on those times. He told me that, Sohail, what do you say about this financial? He told me, tell me the government, Prime Minister Modi's 3 policies which you see that they are, which you are very pragmatic about in future. And first policy I said was this Jan Dhan Yojana. He told me that by opening an account where they have, by opening a 1 rupee account, how can you say that he has financially included those people?
I told him that day, yes, you are right, that if we analyze the current scenario, they may be 1 rupee account, but in coming time, they are going to be revolutionary. All the schemes or government transfers, they will be taken through this route, and that time this will be a revolutionary step in terms of financial inclusion. He tried to persuade me to go other way, but I did not. Now let me see your reflections on it. How do you see that is it only opening a bank account that is important to for financial inclusion, or there is something else? There are many aspects, but Yes. it's one of the important aspects. There is, financial literacy among the people. They have to be educated. You are trying to put it this way, you want to put it this way, that yes, opening a bank account may be the first step, huh, towards our intended motives, but the empowerment people may realize in coming time through various other features that will be compounded to this particular aspect will be highly praised. They will be highly beneficial in lot of other ways. Huh? You are trying to move that point. Is it? Is it? No. Generally, nothing to know about more, huh? No, yeah. Now, second, say I will go to second. You may go here. Infrastructure wise, payment mechanism and interface. This is where you are payment mechanism and interface. ठीक, ये दूसरा पॉइंट है, मगर मैं इसको एंड में लूंगा, एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, फिर इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है. क्या है? बहुत सारी चीजें पढ़नी है. नाउ थर्ड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करेंगे, हम उसमें पहले ही आता है इंडिया स्टैक. क्या आता है? इंडिया स्टैक. अभी इंडिया स्टैक क्या है, ये कैसे काम करता है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट है क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इंडिया स्टैक इट इज सेट अप एपीआई. नाउ आप मुझे बताएंगे एपीआई क्या होता है. आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो आप कल बता दीजिएगा या बाद में बता दीजिएगा जब आपको याद पड़े. ठीक है, सेट अप जब आप एप्लीकेशन कोई बनाते हैं तो वहाँ एपीआई उस चीज में वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कोई भी एप्लीकेशन बनाने में. तो वो आप मुझे बता दीजिए एपीआई क्या होता है, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा आपको तो आपको अगर इंटरव्यू में आपको ये पूछेंगे आप भूल जाएंगे. जब आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, दैट enables utilization of unique digital infrastructure. To solve challenges faced in realizing service delivery stuff, which is paperless, cashless, and personless. So
लिखिए। याद आया आपको एपीआई क्या होता है? क्या? एप्लीकेशन हाँ, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस वही होता है। जब हमने इंटरऑपरेबिलिटी का इशू रेज किया था, जब इस फाइनेंशियल सर्विस के रिलेटेड दो एप्स आपस में इंटरेक्ट कर रहेंगे, उनके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं ना, तभी तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना, अदरवाइज वो अपना ट्रैफिक इसको क्यों दे, या ये अपना ट्रैफिक उसको क्यों दे, अपना डेटा उसको क्यों दे, या अपना डेटा इसको क्यों दे, है ना। तो फिर तो हमारे बीच में ये जो एप्स है ये हमें एक यूनिक एक पर्टिकुलर फंक्शन हमें दे सकती है, मगर इस इंटरऑपरेबिलिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए देयर आर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एपीआईज, और ये इंडिया स्टैक वही है, सेट ऑफ एपीआईज जो किसके लिए है, उन यूटिलाइजेशन ऑफ that enables unique digital solving a problem related to service delivery, which is digital payment, क्योंकि paperless, personless and cashless। ठीक, समझ आया? This is infrastructure wise। दूसरा अगर हम ये देखें, एक फंड, पेमेंट इंटरफेस डेवलपमेंट फंड, PIDF, एक फंड एक एस्टैब्लिश करना जिसकी वजह से एक पेमेंट इंटरफेस, जिससे हम क्या बनाएंगे, पेमेंट इंटरफेस। हाँ, PIDF नाउ थर्ड इज रेगुलेटरी वाइज। इससे आपका आंसर एक कंप्रेहेंसिव आंसर दिखेगा कि वो अलग, ये अलग, ये अलग, इसे कंप्रेहेंसिवनेस, यही फिर आपको सिखाता है कि ऐसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है, आपने डिफरेंट सब हेडिंग्स क्रिएट की, एक इवैल्यूएटर के लिए आसान बनाया, उसको चीजों को देखने के लिए अब टाइम नहीं लगेगा, उसको दूर से ही चीजें दिखना स्टार्ट करेगी। जब जब इवैल्यूएटर को चीजें दूर दूर से ही दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, उसको जितना कम टाइम आपके पेपर को समझने और में लगेगा, उतने आपके मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो एक हमें ये चीज पूरी हर किसी को पता है कि ऐसा ही होता है। ठीक, RBI इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इसमें आरबीआई ने अपने रूल्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, हाँ, ताकि हम एक अगर हमें कोई पेमेंट ऐप बनानी है, पेमेंट इंटरफेस ऐप बनानी है, या एपीआई क्रिएट करना है, कि उसने आरबीआई ने एक सेट डिफाइंड रूल्स किए हैं कि आपकी इनोवेशन, मानो आपकी जो इनोवेशन होगी वो कैसे एक रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन होगी, तो वो कैसे, थ्रू आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। Responsible innovation in this field, to establish a responsible innovation in this field, it's important that RBI has created a regulatory sandbox for it। ठीक, अब आपका फेवरेट सेकंड को हम अभी डिफाइन नहीं करेंगे। सेकंड इज अ लेंथी टॉपिक, मे बी वी मे नॉट बी एबल टू डिस्कस इट टुडे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक। ठीक, तो ये मैं हटाऊं। पांचवा जो है दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें आपको बहुत मजा आता है, जो टर्म सुन के आपको ही दिल में एक नई तार बज जाती है।
फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात करेंगे तो क्या हुआ है, एक तो बनाया गया है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। साथ में आरबीआई ये क्या बनाया है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, ये किस चीज को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंस। यहाँ लोगों को अवेयर किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, हाँ, उनको लिटरेट किया जाता है अबाउट दिस सिनेरियो। ठीक, हाँ, में से एक अवेयरनेस मॉडल क्रिएट किया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिहेवियरल चेंज। एंड नाउ कमिंग टू दिस सेकंड टॉपिक, दैट्स पेमेंट मैकेनिज्म इंटरफेस। इसमें हमें there are wide range of steps that have been taken. We won't be able to complete it today. That's why we'll have to cut short this topic, and we may have to, unfortunately, we'll have to proceed tomorrow with another topic for this for digital payment ecosystem, and finally it will be over, and then we'll move to monetary policy. Huh? And I think ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो जाओ, इतना काफ़ी है। हाँ, और क्योंकि अगर वो 5-6 मिनट का होता तो विल हैव एक्सटेंडेड इट, मगर उसमें ही आपके सवाल आ जाते हैं। और आपका आज टास्क रहेगा कि हाउ डज यूपीआई वर्क, बस इतना ही। ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।